Hello learners, I am Snigdha Pandey. So today we are going to study the defamation chapter of Bharatiya Nyaya Samhita 2023. 2023 में जो BNS आ रहा है भारतीय न्याय संहिता उसमें डिफेमेशन यानी कि क्रिमिनल डिफेमेशन क्या कहता है, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफेमेशन, लेट्स टेक अ स्टोरी. Suppose let's take a picture of a one small town, Satyanagar, in which Mr. Sharma was the principal of a small school, and he was a very small, honest teacher who was guiding his students. One morning, what happened that big journalist Ria Verma posted an online post. What was the post? The post was that the principal Sharma steals the midday meal funds. Means that principal Sharma ने मिड डे मील का पैसा जो है वो खा लिया है, ठीक है. Now within hours this news uh, captured the WhatsApp, Instagram post, spread the post, and parents get panicked, student gets gossips, and the man who taught truth now faces humiliation. Now after inquiry what happened that Mr. Sharma को ये पाया गया कि after the inquiry the people have already, after the inquiry he was found innocent, but the people already judged him and his honor has almost gone now because of the truth, now because of the careless sentence. What was the careless sentence? The careless sentence of the Ria's post. Now my friends, what is this careless sentence is called? This careless sentence is called as the defamation. What is defamation? When the words injure the reputation deeper than any other weapon. यानी कि मानहानि क्या है? जब शब्द किसी की इज्जत को जख्मी कर दे, that is called defamation. So what is defamation? As we have already said that it is the murder of reputation. It injured the reputation deeply than any other weapon. Defamation is nothing but an attack on person's reputation. So let's take a legal meaning. What is the legal meaning? Section 256 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 states that whoever by words spoken or written, by signs, visible representation, makes or publishes any imputation concerning any person, intending or knowing it will harm that person's reputation, commits defamation. So what is the defamation? Defamation is nothing but कोई भी इंसान आपको किसी भी शब्दों से या संकेतों से या दृश्य रूपों से किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के इरादे से आरोप प्रकाशित करता है, उसे हम कहते हैं डिफेमेशन. So defamation means simply means three simple things are there. First, that statement about someone. दूसरा, the publication of the another's person. And third one, intention or knowledge that it will harm the reputation. So there are mainly three things which should be considered if a person is going to defame someone. Defame someone. Okay. But what will happen to Article 19(1)(a) if the defamation will be there? The Article 19(1) says that you have a right to speech and reputation, freedom of reputation. But but we should also remember in mind that the same Constitution, Article 19(2), allows reasonable restriction for the defamation. Here, in the Supreme Court cases, Subramanian Swamy versus Union of India 2016 said that right to reputation is an integral part of Article 21, and freedom of speech is not freedom to destroy another's dignity. So, right to reputation now is an integral part of the right to life under Article 21, and one cannot say that we have a right of speech and expression under Article 19(1)(a). So what is the legal provision of defamation? Defamation now is a criminal offense defined under section 356 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Before, under IPC 1860, it was mentioned under section 499 of Indian Penal Code. So what is the purpose of the law
of putting the section of putting the crime like defamation. The law aims to balance the constitutional right of freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) with the individual rights of reputation. What is the purpose of law, and what judges try to do is they try to make a balance between the Article 19(1)(a) and Article 21. Then what is how you can defend defamation in various laws. You can defend defamation under civil law as well as under criminal law. So what kind of a defense? If you are going to defend yourself under civil law, then truth is alone is enough. And if you are going to defend yourself under the criminal law, then truth plus public good is required. What is the aim of defending yourself under civil law is your personal liberty. And what is the aim of defending yourself under criminal defamation is public responsibility. If you're going to defend yourself under civil law, then the aim will be the personal remedy. And if you're going to defend yourself under the criminal law, then the aim will be public liability. So, what is defamation? Defamation is an attack on the person's reputation, and which is an integral part of the Article 21. Legal provision is 356. Purpose is to strike a balance between right of freedom of speech and expression and 19(1)(a) and right 21. Okay, now let's move towards the that what is a what is defamation. Now we have already discussed about the legal meaning or the legal provision. Legal provision is 356 of defamation. Now what constitutes defamation means that what are the main ingredients of defamation. See, we have already talked about that defamation is nothing but a murder of the reputation. So let's take a story back of the Riyaz story, which I have already mentioned that Mr. Sharma was an honest person and put a post on the social media कि Mr. Sharma has steal the midday meal fund. Okay, let's take a story back. That how will you start? How will you decide that Ria has made a defamation or made a critic statement? Section 356 doesn't punish any harsh statement. It only punishes the defamation. That means if there are certain ingredients which are present in the statements, then only one can be charged with the defamation. So what is the ingredients? First ingredient of defamation is the imputation. Imputation का मतलब होता है आरोप या फिर गलत कथन. तो first there should be a statement or a allegation about a person. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी स्पोकन. आप बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, दिखा के या सिम्बोलाइज जैसे कार्टून या फिर मेम या कोई भी वीडियो. ठीक है, जैसे सपोज करिए इफ यू से मिस्टर शर्मा इज करप्ट और पोस्ट अ मेम शोइंग स्टीलिंग मनी, दैट्स एन इम्प्यूटेशन. ओके, सो what first ingredient is that first ingredient of defamation is the imputation. The accused must make or publish an imputing concerning any person. And second ingredient is the mode of communication. जो आरोप लगाया गया है, the imputation that can be made through words that I have already discussed, that words spoken or intended to read, libel, slander जिसको हम बोलते हैं, signs के through, gestures के through या कोई भी visible representation के through, for example memes, pictures, drawings and media, any other three. So second ingredient which we are going to discuss about defamation is the mode of communication. There is also one thing that imputation must be published. What do you mean by the publish? When it reaches someone other than the person concerned. The statements become defamation only when it reaches to a person other than the person concerned, then it is called as a publication. ठीक है, इफ रिया फॉर एग्जाम्पल अगर रिया मिस्टर शर्मा से ये कहती दैट सर यू आर डिसऑनेस्ट पर्सन इन पर्सन, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन बिकॉज देयर इज नो रिलीज और देयर इज नो पब्लिकेशन. So there should also remember in mind that there must be a publication. Third, there should be an intention or a knowledge. What is the intention and the knowledge? The knowledge to intend or intention to harm or know or have a reason to believe that the statement could harm a person.
So first is the ingredient is the imputation, second ingredient is a publication or mode of third is the mode of communication, and then is the knowledge or intention that particular imputation will harm a particular person. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज टू हार्म अ रेपुटेशन, रेपुटेशन को हार्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट मेंस्ट्रिया, मेंस्ट्रिया मीन्स गिल्टी माइंड. द एक्ट मस्ट बी the particular act must be done with the intention to harm or knowing or have a reason to believe that a such imputation will harm the person's reputation. Okay, harm to reputation means the statement must actually lower the person's reputation. जब किसी कथन से किसी व्यक्ति की सामाजिक या व्यवसायिक छवि गिरती है वही असली हानि है. हार्म टू रेपुटेशन मीन्स इफ the imputation must directly or indirectly lower the moral or intellectual character, caste or calling or credit of that person in the eyes of others, that will be called as the harm the reputation. So there are mainly four ingredients of defamation. First, the imputation. Imputation means making a false statement or allegation, कोई भी आरोप लगाना. दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास पब्लिकेशन. पब्लिकेशन मीन्स दैट मस्ट रीच द थर्ड पर्सन, प्रकाशन जिसको हम बोलते हैं. एंड थर्ड इज द इंटेंशन और नॉलेज. इंटेंशन और नॉलेज मीन्स दैट must the statement must be made with the intention or knowledge to harm the reputation of a person. And last word in harm means that lowers the reputation of person. There are four explanations in the defamation. First is that only the person can be defamed. Is there any group? Is a deceased person can be defamed? Is there an association or a management? Let's take a example of Ria's story. That Ria may said to the judges कि मैंने जो स्टेटमेंट मिस्टर शर्मा के बारे में बोला था वो मिस्टर शर्मा को पर्सनली नहीं बोला था बल्कि उनकी मैनेजमेंट कमेटी को बोला था. तो क्या ये डिफेमेशन होगा? यस, ये भी एक डिफेमेशन होगा. एक्सप्लेनेशन वन ऑफ दिस सेक्शन 56 सेज दैट इफ अ डिफेमेशन इम्प्यूट समथिंग टू डिजीज पर्सन, मरे हुए व्यक्ति को भी अगर आप उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो तो भी आप क्या करते हैं, तो भी आप डिफेम करते हैं. ठीक है, अगर वो जिंदा होता और उसकी रेपुटेशन हार्म हुई होती और उसके मरने के बाद आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट बोला है तो आप क्या कर रहे हैं, दैट यू आर defaming the deceased person. You are hurtfuling of feelings of the family and real relatives. Next explanation 2 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ग्रुप या एंटिटीज के बारे में भी अगर आप ये ग्रुप या एंटिटीज के बारे में भी कोई भी इम्पुटेशन या आरोप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पेपर्स एज सच, दैट कैन आल्सो बी अमाउंट अ डिफेमेशन. थर्ड एक्सप्लेनेशन कहता है यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग डायरेक्टली और यू आर इम्पुटिंग एनीवन directly but you are saying indirectly or ironically. For example, ले लीजिए that A is an honest person, he never stole B's watch. या फिर अपनी वाली स्टोरी ले लीजिए, कहते हैं कि मिस्टर शर्मा was very honest person and he can't steal the food fund. So you are saying indirectly, but can this indirect imputation can be termed as defamation? Yes, indirect statement can be also be termed as the defamation. Explanation 4 says that what is the harm to the reputation. See how you considered a defamation. There must be 4 ingredients, 4 ingredients होने चाहिए उसके, और लास्ट वाला ingredient कहता है that there should be harm to a reputation. Now explanation 4 of 356 says that what is harm. If you are imputing some person's character in some significant way means in moral, intellectual, professional or credit, then you are harm that person. What is the punishment of defamation? The punishment of defamation that who is given under subsection 2, that whoever commits a defamation shall be punished with the simple imprisonment up to 2 years or with fine or with both. यानी कि अगर कोई भी defamation करता है तो उसको simple imprisonment दी जाएगी, या तो 2 साल तक की या फिर fine या फिर
both. यानी कि जजेस के पास आपके पास 3 choices हैं. For example, first is the imprisonment, second is the fine, and third one is that both. Okay, so there is also न्यू एडिशन जो कि हमने पनिशमेंट वाले चैप्टर से ले सकते हैं कि देर इज ऑल्सो न्यू अपडेशन इन द चैप्टर ऑफ पनिशमेंट दैट इज अ कम्युनिटी सर्विसेज. तो सेक्शन 356 ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ कम्युनिटी सर्विस. दिस इज एन एडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन. कि अगर फाइन नहीं लगाया जा सकता तो आप कम्युनिटी सर्विस का भी पनिशमेंट दे सकते हैं. Okay, next move towards the subsection 3 and 4, which talks about publishing or selling defamatory statement. What is publishing and selling of defamatory matter? That if anyone prints or engraves or sends sales any defamatory material knowing it's false, they are equally guilty. Means अगर कोई भी इंसान कुछ भी लिखता है तो उसके साथ साथ उसका पब्लिशर, उसका एडिटर, प्रिंटर, वेंडर भी उसके साथ डिफेमेशन के लिए लायबल होगा. ठीक है, तो आप कोई भी चीज प्रिंट कर रहे हो तो भी आप डिफेमेशन के लिए लायबल हो, कोई भी चीज एनग्रेव कर रहे हो तो भी आप डिफेमेशन के लिए लायबल हो, सेल कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो सेल के लिए डिफेमेटरी मैटर तो भी आप क्या हैं डिफेमेशन के लिए लायबल होंगे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दैट ये ऑफेंस किस टाइप का है, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंस. द डिफेमेशन इज ऑब्वियसली बेलेबल ऑफेंस है. बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि अक्यूज कैन गेट द बेल इजीली. दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जहां पर पुलिस can arrest police cannot arrest without a court warrant. Third one is so police the nature of the defamation is that it is bailable and non-cognizable offense. Now let's move toward that. Is there any exceptions to the exception to the defamation? Yes, there are some exceptions to the defamation. Exception 1, that exception 1 क्या कहता है? एक्सेप्शन वन कहता है कि इफ यू हैव मेड द स्टेटमेंट, जो कथन आपने बोला है अगर वो सत्य है और पब्लिक गुड में बोला गया है तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, if there is any statement which is true and which is made for the public good, that statement will not be counted as defamation. And you should also remember in mind that both the two ingredients, truth and public good, should present parallelly. There should not be absent of any one of the one ingredient. So सत्य और पब्लिक गुड में बोला गया कोई भी स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होगा. ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस. लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई भी इंसान सिविल लॉ में उस डिफेंस लेता है तो वहाँ पे सच्चाई ही काफ़ी होती है और उसके लिए पब्लिक गुड को ज़्यादा नहीं वो किया जाता, पब्लिक गुड ज़्यादा दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. अगर कोई क्रिमिनल लॉ में कर दिया जाता है तो इट इज़ क्रूशियल दैट यू शुड शो योर इंटेंशन और मोटिव दैट विद द ट्रुथ एंड पब्लिक गुड. With the public good. So both the two ingredients, truth and public good, should present that if your imputation shows the truth and public good, so that will be not be amount as the defamation. Okay, so if it is not a defamation to make or public something which is true, if it makes for the for the public good, the statement must be truth and it is also should be made with the public गुड. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट है वो किसी भी एमएलए की एक्सपोज कर रहा है दैट बट फलाना फलाना एमएलए इज टेकिंग ब्राइब और उसकी रिपोर्ट जो है वो एविडेंस पे बेस्ड है और इट एम्स टू मेक पब्लिक फंड सेफ, तो क्या यह स्टेटमेंट डिफेमेशन होगा? नहीं, बिकॉज देयर बोथ द इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट, ट्रुथ एंड एज वेल एज good public good, so there will be no defamation. लेकिन अगर ये कहता है कि if someone makes or publishes a statement about their neighbors that that particular neighbor is divorcee and he is married and he has an affair, then then that statement will be a defamation. Why? Such है, but it is not made for the public good. Okay, so next exception is of defamation is the public servant. What is the next exception? That obviously हमने ये देखा पहले वाले एक्सेप्शन में that if any statement is based on truth and public good,
that will not be count as defamation. Now let's go towards next step, that what will happen to the opinion if anyone makes an opinion about certain person. That for example, you can make up a opinion about that particular person is a very good person, can or particular person has not done a duty in a good manner, so can be termed as defamation. Yes, that defamation exception 2 says about the same thing, that if you had made any statement in good faith about any public servant in discharge of their public functions, या फिर आप उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा. So if you are talking about any, if it is not, so in short, it is not a defamation to express in good faith any opinion regarding the conduct of any public servant in the discharge of their duty. For example, अगर एक citizen है, वो journalist है या फिर कोई active honestly किसी criticize करता है किसी भी government officer को उसके official actions को लेके, तो क्या वो defamation होगा? वो defamation नहीं हो रहा. For example ले लीजिए कि one person said that district collector mishandled the relief funds. Whether this is a defamation? No, that will not be counted as defamation. Third exception is about the public opinion. Public opinion या किसी person या कोई public person या फिर का public issue के बारे में आप कोई भी अपना interest दिखाते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, that will also not be counted as defamation. Okay, but that statement should be made in good faith. For example, if a person voluntarily takes part in a public question, elections में लेते हैं या social reforms में, arts में, sports में लेते हैं, तो भी ये भी defamation में नहीं होगा. For example, आप ले लीजिए, if जितने भी film critics होते हैं, अगर वो एक statement बनाते हैं that particular actor has performed very bad in the movie, so that will not be counted as defamation. Why? Because he has made a critical statement, he has made in good faith. So anything which is of public issue or public person, that will not be counted as defamation. Now move towards exception 4, true reports of court proceeding. What are the true reports of what does means that if anyone publish the true reports of any court of justice is, that will not be counted as defamation. Okay, next exception is the merits of the cases. Merits of the cases means if someone expresses the opinion in good faith regarding, for example, अगर कोर्ट ने ये डिसीजन सही नहीं लिया है या फिर ये विटनेस के बारे में कोई भी बोल रहा है इन गुड फेथ, या किसी उसके लॉयर के बारे में बोल रहा है या उसकी पार्टी के बारे में बोल रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट डिफॉर्मेशन होगा? ये स्टेटमेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा. Next, move towards the next exception, exception 6. Exception 6, that performance review. Performance review means कि if you are giving your opinion regarding the performance of any person, for example, play, movie, book, music, speech, it is not a defamation. For example, if you say that particular film was very boring and it was not deep, that you did, this statement will not be termed as defamation. Next, acquisition, lawful authority. Next, particular lawful authority. Next exception. Next move towards the next exception, acquisition to proper authority. Acquisition of proper authority means if you accuse someone before a lawful authority. Lawful authority means if you are accusing someone before a police, if you are accusing someone before a principal, if you are accusing before a particular court, that for example कह लीजिए कि if आपने किसी बच्चे को ले जाके प्रिंसिपल के सामने रिपोर्ट किया और ये बोला है that particular person is very is not good, तो ये क्या होगा? ये डिफेमेशन नहीं होगा. Exception 6 आप already have mentioned. Exception 8 के बारे में बात करते हैं. 9 के बारे में बात करते हैं, protection of interest. Protection of interest means if you make any statement to protect your own, another's और any other public interest, किसी भी अपने हित के बारे में, किसी और के हित बारे में या फिर किसी भी public interest के हित के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी वो defamation
नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि आपके जो एम्प्लॉयर है आप जो रख रहे हैं ये मेरा पुराना एम्प्लॉयर रह चुका है और इसका कंडक्ट सही नहीं है, तो क्या ये डिफेमेशन होगा? आप सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और जो कि सच भी है, तो ये डिफेमेशन नहीं होगा। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सेप्शन, कन्वेइंग कॉशन। कन्वेइंग कॉशन मीन्स दैट गिविंग a caution or a warning, that if you are warning in any person in good faith, that is also protected under exception 10 of defamation. How it is protected? That you are warning someone in good faith or you are helping someone to avoid any harm, कि जिससे कि उसको कोई harm ना हो, इसलिए आप उसकी क्या करें, मदद करें, and this is also covered under exception exception 10. So basically the summary of the defense is the कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डिफेमेशन क्या है? इट्स अ मर्डर ऑफ द रेपुटेशन. डिफेमेशन क्या है? दैट यू आर लोअरिंग द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन इन द मोरल एंड द हाईली डिग्निफाइड पर्सनैलिटी. इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स ये होने चाहिए कि इम्प्यूटेशन होना चाहिए, दूसरा हार्म ऑफ द रेपुटेशन होने चाहिए, पब्लिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद पब्लिकेशन होनी चाहिए, हार्म होनी चाहिए. ये 3 और 4 आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं. और लेकिन एक्सेप्शंस क्या हैं? 10 एक्सेप्शंस है. पहला एक्सेप्शन ये है कि इम्प्यूटेशन जो होना चाहिए वो अगर वो सच है और पब्लिक गुड में बोला गया है तो आपकी स्टेटमेंट डिफेमेशन नहीं होगा. अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके फंक्शंस को लेकर, तो वो स्टेटमेंट डिफेमेशन नहीं होगा. अगर आप किसी भी पर्सन के कंडक्ट को वो कर रहे हैं तो वो आप डिफेमेशन नहीं होगा. अगर आप ट्रू रिपोर्ट्स को किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस को वो कर रहे हैं तो ये भी डिफेमेशन नहीं होगा. अगर आप किसी भी मेरिट्स ऑफ द केस को बता रहे हैं कि ये जजमेंट सही नहीं दिया है या पर्टिकुलर विटनेस के बारे में, मेरिट्स पार्टीज के बारे में बता रहे हैं, तो भी वो डिफेमेशन नहीं होगा. अगर आप किसी परफॉर्मेंस के बारे में अपने व्यूज दे रहे हैं, पर्सनल व्यूज दे रहे हैं, तो भी वो डिफेमेशन नहीं होगा. अगर आप किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के सामने किसी को भी पेश करें तो वो भी एक्यूज करें तो वो भी डिफेमेशन नहीं होगा. ओके, so these are the 10 exceptions which are covered under section 356. So summary of the defamation is that what is defamation, what are the ingredients of defamation, what are the explanation of defamation, and the exceptions of defamation which are covered under section 356 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Thank you.